Hello everyone, welcome to the SBI Securities weekly wrap podcast. So it was a very brutal week for the Indian markets. The sell-off was huge and it was a fourth consecutive weekly decline. तो benchmark indices Nifty और Sensex 2 से 3% डिक्लाइन हुए इस हफ्ते, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में पेन ज़्यादा था। तो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 5 से 7% करेक्ट हुए एंड हमने देखा कि एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी एडवर्स था। तो एक स्टॉक एडवांस करता था तो 10 स्टॉक डिक्लाइनिंग साइड पे थे। इफ़ वी talk about the sectoral indices, all the indices on the BSE ended in the red this week. The IT index outperformed relatively with only a 1.6% loss for the week. की रीजंस क्या थे इसके पीछे? तो सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स काफ़ी वीक आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम लार्ज कैप्स टू मिड टू स्मॉल कैप्स। मैनेजमेंट कमेंट्री भी म्यूटेड रही है एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स हाई वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड कर रहे थे। FII सेलिंग लगातार जारी है। तो इस हफ्ते भी FIIs ने 19,850 करोड़ का नेट सेल फिगर था FII से। DIIs नेट बॉट 22,915 करोड़ एंड IPO एंड QIP की पाइपलाइन भी काफ़ी लंबी है। तो ये सब इश्यूज भी DII लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर रही है। Speaking about globally, the markets, all the indices, major indices ended in the red this week, except the Shanghai, which was up 1.2%. But the gains in China were also muted if we see the performance of the last week. The US 10-year yield is also rising, and that is leading to flight of money back to the US. इस हफ्ते की कॉरपोरेट न्यूज़ तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने अपना रेलवे इक्विपमेंट डिवीज़न बेचा टू सोना BLW फॉर 1,600 करोड़। आर्केड डेवलपर्स ने एक नया रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन भांडुप मुंबई। इसका टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल होगा 760 करोड़ का। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑर्डर इनफ्लोज, तो L&T received a large order from the nuclear segment where they have won a large project order for a nuclear fusion project in France. KEC continues to receive multiple orders, so 1,142 crore was the order win this week. Azad Engineering received a 135 crore order from Honeywell Aerospace. Talking about next week now, so next week, in the last few hours, Israel has launched multiple attacks on Iran's military facilities, and therefore fresh geopolitical tensions have started again in the Middle East. Iran has announced that it is likely to retaliate, so this could keep crude oil prices higher starting next week. Next week also many key result reactions will be there. So ICICI Bank and CDSL will be reporting their numbers this weekend, so they will react on Monday. Also next week काफ़ी large cap results है। तो भारती एयरटेल, सन फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी, L&T, आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा पावर, इन सब के नतीजे आएंगे। मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ऑल्सो many of them will be reporting their numbers. In terms of the economic data, the US non-farm payrolls for the month of October and the Chinese PMI data will be out on Friday. Friday for Indian markets, it's Diwali, so we'll be having a special Muhurat trading session on Friday in the evening, a special 1-hour session. So markets next week are likely to start subdued due to the fresh geopolitical tensions and ahead of the US elections, and stock specific result reactions will continue. So
investors are advised to accumulate good quality stocks. कंपनीज जिनने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं Q2 में एंड डिसेंट करेक्शन भी आ गया है इन सब स्टॉक्स में एंड वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है. हमने इस हफ्ते SBI सिक्योरिटीज़ के दिवाली पिक्स भी रिलीज़ किए हैं, तो वन कैन रिफर टू ऑल दी stocks available on our website as well as across our social media channels. We have released 12 stocks in the Diwali picks. So friends, this was all about the weekly market podcast. Thank you for listening. For other key corporate actions and other highlights, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. Thank you. Have a happy trading week next week, and happy Diwali. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.